Everybody, welcome to Abhi Awaaz, Abhinandan Educational and Welfare Society's platform for meaningful conversations that drive real impact. This is our very first version of Abhi Awaaz Cafe. This is a follow-up from our first version where we raised very important issues about education and child welfare. This year, we wanted to kick this off with the most important subject matter. Why? Because it's also close to our heart. We have a female-driven founder who is working for women empowerment. And we thought what would be a better opportunity than to use March as the month of women's celebration. We know it's a Women's Day, but we decided कि हम मार्च के महीने के हर 31 दिन को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं to feature women like you who are making impact in their society and also to see कि कैसे हम जुड़ के बात करें to take this forward, how we are able to consistently bring women empowerment to all the women out there throughout the year and so on. इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ बढ़े, मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. आज हमारे सेशन में कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके some women have joined us who are leading at the top of their field, starting with Anupama Saini, who is a librarian at the University of Southampton, Delhi. And she's a champion of reading and knowledge access. Because we have featured everybody's story widely on our platform, so I'm only going to do brief introductions. Then we have Dr. Chetna Banga. She is a senior scientist at AIMS and she has been leading at the top of her field. She has had some major achievements in her career. She is recently completing her PhD and I think we will soon see a photo of her getting awarded that. And also she's a mother to a 2-year-old daughter. Moving on, Suvarna ji अभी हमारे को join करने की कोशिश कर रही हैं. So I'm going to reserve the introduction to when she joins us. And of course, our founder and CEO at Abhinandan and Educational Welfare Society, Mrs. Manisha Bhatia. She is our guiding force, our driving force in the community to advance inclusive education for all. We would love to hear your stories. And सबसे पहले segment में शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम आप सबकी inspiring stories सुनना चाहेंगे. What are the challenges that you overcame also by receiving the support of your community and the kind of support आपका supporting system that exists to enable you to be who you are right now, and this applies to your personal, professional and community aspects, all of them. So over to whichever one wants to go first. Chetna, would you like to go first? हाय शानी, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? सुवर्णा जी बिल्कुल आपका वीडियो जी सॉरी मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. तो मैं आयुष के मेरा एक एथलीट है उसके फोन से कर रही हूँ. ओके यस वी कैन सी यू नाउ. ये वेलकम सुवर्णा जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता है एंड मैंने आपको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया था सबसे. तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सुवर्णा जी एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट है, एक UNSD अवॉर्डी है एंड शी इज अ पैशनेट एडवोकेट फॉर डिसेबिलिटी राइट. सुवर्णा जी ये हमारे साथी हैं. मनीषा भाटिया जी हमारी फाउंडर हैं अभिनंदन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की, हमारी गाइडिंग फोर्स है. अनुपमा जी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन दिल्ली से एक लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रही हैं, पर ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव है टू ऑल द स्टूडेंट्स इन हर यूनिवर्सिटी. एक्टिवली बहुत सी यूनिक चीजें करती हैं जो बताएंगी हमें. एंड देन देयर इज डॉक्टर चेतना बांगा. शी इज अ सीनियर साइंटिस्ट एट एम्स. तो हम अभी यही बात कर रहे थे चेतना जी से कि वो थोड़ी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें कि कैसे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की वजह से शी इज एबल टू अचीव वेयर शी इज टुडे and how she is able to sustain that both professionally and personally. Over to you, Chetna. Hi, thank you, Shani. First of all, thank you, Manisha ji. Thank you, Ayush ji and Anupama ji. So it's nice to see the woman power here. It's a great thing. Let's see. My post-graduation completed in 2013. In the internship only itself, I have joined AIMS. But the turn came here when I get to know that neurosurgery didn't welcome females. So that was the biggest challenge. And for that, I have fighted for nearly 5 years. But when the law came, and the first faculty joined AIMS neurosurgery in 2017. So then also there was a bracket that females can't do the
surgeries, long-term surgeries, 12 to 14-hour surgery. That was also, the working of females was also limited to the microsurgeries, radiations. So that gave a challenge that this can't be done. So we have again fighted, and now I have completed my PhD. Soon I will give my viva within a month or so. That was in the neuroscience and the MR. Positive environment is that nowadays females are more passionate about their careers and along with the families. So I got a support from my guide. She is a PhD in 1990 when she was she just gave a birth to a daughter, 1 month old daughter, and she left India for her PhD and from the Cambridge. So she's a physicist and a BMS. So there we have started a role, and now along with her, we have made a first indigenous MRI. Till yet, the entire India was taking the MR from the outside. In nowadays, in a diagnostic thing, MR is a very, very important. From fatty liver to neuro disorders, depression, everywhere the MR. Instead, lifestyle management also can be seen through MR. So I would like to people to come and work with the functional MR and explore how the lifestyle management can increase their brain activities, and they can see the changes. And one more important thing, our mantras. In the Vedas, we have the mantras. They have also have a very, very huge impact on the brain activity. Till yet, the people didn't know that how the mantra can change your impulse level. Very important. And now we have come to the one of the most important research, that how the precaution can be better than a cure. And we have taken so many biomarkers from the people having different prakriti. It's an Ayurvedic concept, so they can aware of that we are more prone to these type of diseases. So in the future, you will be able to know that I am prone to such type of diseases, and I can, by doing the lifestyle management, I can cure myself without medication. Great, Chetna. I think we just got to learn a little bit more about what you're doing और क्या neuroscience के pathways आगे develop होने वाले हैं. Thank you so much for that. Also, I think that this is a testimony to हम as women, क्योंकि हम multitask कर रहे हैं, we are doing so many things in our life. It's so difficult to sort of adjust with everything and make sure we are everywhere 100%. Clearly visible जब हम देखते हैं technological challenges आते हैं, उसका सबसे बड़ा reason एक ये भी होता है because we are trying to stay connected with each other in whatever way we can. Till then, we'll move on to hearing more stories. First, we'll get to ask Anupama कि आप हमको briefly थोड़ा बताइए about both the support systems that you're talking about in terms of professional sphere and personally. Thanks, Ishani, for the opportunity. I think it's wonderful to be on this platform. When we talk about support system in both personal and professional lives, I have had a set support system which has worked tremendously well in both my personal and professional lives. I think the biggest thing which a woman gets pushed into in our society is marriage or relationship. And we don't give enough importance to who we choose as our companion. Because we are usually just told that, this is the sort of checklist. If somebody checks on these points, you should just go ahead with them, which starts usually with the earnings. I feel that whatever a woman chooses to do in her life, be it work in the public sector, in the social sector, in education, or in the corporate, it's very important that they have a good life partner. Because I have seen so many people who get stuck. They have such potential, but they get stuck in wrong partnership. They have, then burden which comes from both sides of the families. And a woman ends up sabotaging the career or making compromises on it. Thankfully, that didn't happen with me because my partner is perhaps the biggest support system that I have in my life. For the last 3 years or so, he has been pushing me to do my best.
ensure that I contribute meaningfully to my work, but also to the wider society in whatever ways we can. For example, we work a lot on climate and sustainability because we feel for it, or we work for animal welfare because we feel for it. So he has been my biggest support system, both in personal and professional spheres. In fact, when I joined Southampton, University of Southampton, Delhi, and because it was a new campus, it was the first international branch campus to open in India, he volunteered to help me curate the collection or, do some technical processing just because he wanted the library to look good and for me to have some space to think. So that's one thing. Second, I think which every woman should have is a set of mentors. Even one mentor, but a good mentor, can change our life so much. And I have had the privilege to have various mentors over a period of time. They have helped me in my personal life when I was going through particularly, a very troublesome time in my personal life. And I've had amazing mentors in my professional life as well. For example, right now in my current job, the university librarian who is based in the UK takes out time. She's the director library, but she takes out time every month for half an hour to go through the problems which I'm facing at work or how to ensure that there's a career progression. Should I do a PhD or an MBA? Those sort of things. How should I write or how should I do research? I'm writing a book currently, so she also guides me on that. So having a good set of mentors is very important because sometimes we are stuck in life and we feel that this is perhaps the toughest movement. I don't know how to get over it, but somebody else has already done this. Somebody else has been through something similar in their life. And with God's grace, I've had so many people who have pushed me through the hardest times. And I am here perhaps standing on the shoulders of these giants is super important. And lastly, family, of course. I have had my family members support me through, I think the biggest unconventional decision was when I chose to become a librarian. And when people thought that nobody should who becomes a librarian? But they were there for me. They knew that I love books. I love being around books and I understand that information is the new currency. So they understood me, they helped me, which again helped me in my academics and then securing a government job and then shifting to British Council. So I have worked across sectors and family support has been constant. So that has been my third biggest support system. Apart from that, friends. So right now I am at my friend's place. I've come here for a break on a vacation and we live with 5 children, 3 dogs, 2 cats, all rescued. And you cannot hear a thing in the background. That's the kind of, camaraderie or community which I've been blessed with. So I have such friends in my life, which again, like we sit down together, we think what are the problems going on in our lives and how can we as a team sort this out? Does somebody need help building a website? Does somebody needs screaming on the top of their voice as to what are they doing? Do you need help in streamlining your LinkedIn profile? How can we do it for each other? And sometimes just Absolutely. talking helps a lot. So I have amazing set of friends whom I can lean on. And these are the 4, I would say, pillars of my support system. Beautiful, beautiful. Manisha ji, आप क्या कहना चाहेंगे? What is your story? Okay, I would like to start by thanking you all. Thank you, Shani, for having us all over, collecting us, doing all the hard work, and having such an esteemed panel where we could, talk our heart out. And I would like to take what Anupama said further and curate it with what I feel in continuation, because what Chetna spoke was very different, and I'll come back to it maybe later. Sure. And Anupama, thank you. The society is such around women, and the time is very different, and all of us are very, very blessed, that we are doing good in our respective fields and we have support system aligned. And India is such a country where family system is the best example of reciprocity and
how we live for each other, how we help each other, whether it's friends, family, even pets are family, part of family now. I have two dogs at home, and I come from a very, very simple, humble background, and my journey is very simple. My parents were very senior IS officers, and while growing up, and always thought that what in me could be that I would attain a level to become an example in society and create some change. So that subconscious mind, that feeling was always there, always lying somewhere around my journey with me. Getting over was not easy. So while growing up, I learned that life has to be somewhere where I could make an impact or help somebody. And the journey has been very, very blessed and very thankful. I'm very happy wherever I am now. When I was growing up, I learned that this is the way of life, and I've been living through it till now just because of the right support of the family members. In fact, Abhinandan is the most beautiful example of the right family support. I had my journey through jobs, I had my own learnings, I had my journey where I gave up everything for motherhood because my mother was working and I never had enough time spent with her on everyday basis, on weekly basis. That was somewhere hurting me inside. And I had my first child. I decided that I will give up everything and I'll be with my children and I will enjoy. Though I had huge, huge family to support me. I'm still in a joint family, and to my marriage, I got the right support with right motivation to create this beautiful platform. And that's why I call Abhinandan my third child. I put in all the effort, all the love, all the energy throughout the day. Every minute I'm thinking, I'm consistently involved, and I always tell people, those who are working with me and around me, always tell that that energy has to be there, and you should keep thinking. There is no holiday where you can say that, yes, now I can take a break. I think being a woman in itself is beautiful, and with right amount of efforts and with your achievements, we should know how to give it back. And coming back to what Anupama said, that yes, we need right support from our people. Nothing can be achieved without that. Beautiful. Thank you, Manisha ji. तो वर्णा जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए थोड़ा आई वुड लव टू समराइज दिस बिकॉज आई वुड लव टू ऑल्सो मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. आई लाइक हाउ सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो डाइवर्सिटी है इन द पैनल राइट नाउ, दिस इटसेल्फ इज रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ women are progressing in society and कितना पोटेंशियल है कि अगर आप कोशिश करें और आपके पास सही सपोर्ट सिस्टम हो तो आप कितना आगे जा सकते हो. बिकॉज इन दिस फ्रेम राइट नाउ व्हाट आई सी इज वन वेरी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन despite her challenges that may have come due to physical abilities. उसके बावजूद उन्होंने उसी फील्ड में इस तरीके से एक्सेल किया है कि वो आगे जब हमसे बात करेंगी तो वो स्टोरी शेयर करेंगी. Somebody who is showing कि knowledge and information is power in different capacities, where Dr. Chetna is at the top of her field in scientific research, क्योंकि हम बात करते हैं कि कैसे we need more women in STEM. और दूसरी तरफ देर इज अनुपमा हु इज मेकिंग श्योर कि इंफॉर्मेशन जो है जितना बेस्ट तरीके से क्यूरेट करके आगे भेजी जा सकती है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कंज्यूम एंड प्रोसेस एंड learn further. Manisha ji, who's ensuring that not only women but children, everybody has that access to education, because the way she views the work at our community level, उनका एस्पिरेशन और सारा फोर्स ही इसी बात को लेकर रहता है कि कैसे जिन बच्चों के पास एक्सेस नहीं पहुंच रही है वो बच्चों के बारे में भी somebody has to think, and it does not mean that कोई भी चैलेंज आ रहा है तो you step back, but instead you think about how you keep going. तो वो she's a big icon of resilience in that matter, कि कोई कितने challenges भी at a community level on a daily basis, but she doesn't back down from it. तो नेक्स्ट हम जो बात करना चाहते हैं, हमारा जो सेगमेंट है, दिस इज अबाउट इंस्पायरिंग स्टोरीज स्पेसिफिकली फॉर सम पीपल हु वांट टू शेयर कि उनकी जो की चैलेंजेस, वन मेन चैलेंज जो आपने ओवरकम किया, वेयर यू गेव, सबसे पहले तो उससे उभरना वाज अ चैलेंज. आफ्टर हैविंग रीच्ड द स्टेज जहाँ पे आपने अपने आप को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया, आपने वो भी कोशिश करी दैट हाउ यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर फेसिंग नेगेटिव चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ नेगेटिव इश्यूज इन आवर लाइफ,
हम उस चीज को कई बार इंटरनलाइज कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि अब यही, दिस इज आवर इकोसिस्टम, दिस इज व्हाट वी हैव टू लिव इन. इफ यू फाइट बैक एंड इफ यू मेक सक्सेस फॉर योरसेल्फ, देन समटाइम्स यू आल्सो फील कि अगर मेरे साथ ये हुआ था तो हाउ डू आई मेक श्योर दैट अदर either don't face that, or how I can make things easier for other people. And the two people I would really love it if they could share their stories is Anupama and Suvarna ji. While we wait for Suvarna ji to join us in full strength, Anupama, why don't you share your story, that one challenge that you've overcome and you make sure, because I know आपने काफी बात करी of how you have built a tribe of your own, और कैसे within your tribe you become a support pillar who are your support pillars also. But in detail, if you were to talk about that one challenge, please share this with us. There's just so many challenges that it becomes difficult to pick one. But I think one challenge which has been the biggest in my life was getting into a wrong marriage. So I got into an arranged marriage, and which, an arranged marriage is done with the best of intentions from your parents, but it does not, turn out to be that great. So after I got married, I got to know that things were not as they were supposed to be. And I have been through, domestic violence, dowry harassment, and multiple repeated episodes of it. So I was in this abusive marriage for 2.5 years. And that's when, after that, I put a hard line to it. And I was like, I'm not taking it anymore. And I stepped out of it. And it took me about 2.5 more years to get my divorce finalized and get out of it completely. It was only last year that the divorce got finalized. Now I am without any, burden, so to say. What really helped me overcome this challenge? Firstly, family, yes. A lot of support from the family, because they literally rescued me when I was about to get killed, because it was a very, very violent episode. But second, biggest support system was my money. Even when I was in an abusive marriage, I never left my job. There were these episodes wherein I was forced by my ex-husband or my ex-in-laws as to, why do you want to earn when your husband is earning so much? Or there is a compromise on the quality of life at home because you work such long hours at work. And because my nature of work was such that I have curated and delivered a lot of social events, high prestige, key stakeholder VIP events, I used to work late nights. And it was always a question, as to, why do you want to do it? So my nani, actually, you will not see this advice coming from someone like, so old as her. She's not educated. She does not have a degree. She has never worked professionally anywhere. So this kind of stayed with me. I never ever gave access to my financials to my ex-husband or to anybody. I asked him to open a separate account in which we would put money together for the monthly expenses, and my money has been my money. My assets have been mine. I never got into a joint sort of a thing unless I was confident that I can live with this person for the rest of my life, which I was never. So our biggest strength as women is our money, because only with that you can ensure that you are not a burden on somebody else. You have enough money to pay for your litigation. Litigation is expensive. You can't rely, at least I couldn't rely on the public systems. And for money, you need to invest in your skills. So you have to be skillful. It doesn't really matter whether you have a very fancy degree or not, whether you are fluent in English or not, but you have to have some kind of skill to transfer that, to ensure that there's some sort of money coming in. I would never say that a 20,000 job is a bad job. A 10,000 job is a bad job. Any job getting you money is good job, and you can start from anywhere. So now I see so many women who are stuck in, abusive marriages, or girls who are getting pressure from their family to get married. I have, after my incident, and after that, so many of my juniors from my college, from my school, or somebody I've met during my debating society days, came up to me and they said that, we're stuck in similar sort of situation. Can you tell us some contacts of lawyers? How do we get through this? So many women have come out and, asked for help. So now I try to guide them through whatever little I know from my experience, and to ensure that they don't give up. They don't stay in bad marriages, that they deserve better. They deserve a life full of dignity with, people who love and respect them, and not anywhere because
the society expects them to stay put. I have been the first person in my entire bloodline to get a divorce, and I'm very, very proud of it because I chose not to stay there. So, this was the biggest challenge. And yes, apart from your family and friends and whatever, money remains like a must have for any woman. You need to earn your own money. You cannot be dependent on anybody else, because if it's somebody else giving you money, that's basically a remote control which you don't want to give to anybody else in your life. You can make bad decisions, you can fall down and get up again, but you need to do that for yourself. Nobody else should do it for you. So yeah, those are my two thoughts on it. Thank you, Anupama, for sharing this openly. You know, it's a realization, and I always address young girls and tell them that financial capacity is very important. There has to be a way you look at your life, and that can only come through financial capacity. I have a 23-year-old daughter, and I always tell her that, you know, whatever mistakes I've done in my life, you better get through them. And what will sail you through would be only your financial stability. थैंक यू अनुपमा, आपने ये स्टोरी जो शेयर करी अपनी, आई नो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और क्लियरली आप बहुत हिम्मत वाले हो, that you had the courage, bravery then and the courage and bravery to share it now with us. सुवर्णा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं दोबारा सवाल रखती हूँ। तो अभी हम सबसे इस समय इस सेगमेंट में जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि क्या मेन चैलेंज है, कठिनाई है जो आपने अपने जीवन में, क्योंकि एक तो मुश्किल है, जैसे अनुपमा ने बोला, सिर्फ एक के बारे में सोचना मुश्किल है, बिकॉज बहुत होती हैं कठिनाइयां, स्पेशली एज अ वुमन। तो ऐसी क्या वो एक कठिनाई है जो आपको लगता है आपने ना कि सिर्फ ओवरकम किया अब पूरी अपनी मेहनत से, उसके अलावा आपने ये भी निश्चय लिया कि अब जब मैं उस पड़ाव पर हूँ जहां पर मैं औरों से ज्यादा बेहतर सिचुएशन में हूँ, जिससे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं या दूसरों का को सपोर्ट कर सकूं, तो वो आप क्या वो कठिनाई है और आप क्या वो चीजें कर रहे हैं जिससे कि आप औरों के लिए वही सपोर्ट सिस्टम बन सकें जिसकी शायद कभी आपको जरूरत रही थी। थैंक यू ईशानी। एंड आप सबको मैं ज्यादा सुन नहीं पाई बिकॉज मैं जीबी हूँ अगेन में, बट यस अनुपमा जी, मैंने आपको सुना अभी। और एक बात तो है, देखिए जो लेडीज है उनके जीवन में सिर्फ एक परेशानी तो है ही नहीं। वो हर जब से वो पैदा होती है ना, तब से आई थिंक जो हमारा माइंडसेट है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं परेशानी से ही शुरू होता है। लेकिन लड़की हो गई तो अभी भी मतलब सिर्फ कल का एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अपने ससुराल गई थी, सामने वाले घर में लेडी है, उसको बच्चा हुआ, पहला ही लड़का हुआ। मेरी सास कहती है, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे कि लड़का तो सुंदर है, लड़की तो ऐसी ही है, उसको सुंदर लड़की भी मिल सकती थी। तो माय सास सेड, मेरी सास ने बोला तो क्या हुआ, पहला पोता दिया है। सो ये जब बात सुनी ना, इट्स अ टेरिबल। कभी भी किसी को भी मतलब इंडिया में मैंने एक चीज तो देखी है, सेटिस्फेक्शन है। लेडीज को लेडीज से नहीं है, जेंट्स को तो लेडीज से था ही नहीं, पर लेडीज को लेडीज से भी नहीं है। सो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। द सेकेंड थिंग, अभी हमारे घरों में हमें जो संस्कार, अभी जैसे आपने नानी की बात करी या दादी की बात करी या चीजों की बात करी, उसमें भी एक चीज मैंने देखी है कि हमारी मम्मी आज भी बोलती है कि भैया डोली गई है, अर्थी पे ही आना है। आई थिंक ये वाला सो इस परसेप्शन को बदलने के लिए हम लोग आज भी देखो कहाँ तक पहुंच गए हम। क्या कहते हैं वो, कल्पना चावला मार्स तक पहुंच, मतलब हर जगह चले गए, लेकिन फिर भी हमारी मेंटालिटी तो यही है, बेचारा बिचारी, और ये इन्हीं सारी चीजों में अटके हुए हैं हम अभी भी। हमने आभूषण बदल लिए, हमने कपड़े बदल लिए, हमने हर चीज बदल दी, बट हमने अपनी सोच ही नहीं बदली। हम आज भी उसी सोच में, और ये मैं कहाँ रह के बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली जैसे शहर में खड़े होके बात कर रही हूँ, यहाँ पे हूँ मैं। तो अगर दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज की ये हालत है, पहले मैं महाराष्ट्रियन हूँ, नागपुर से हूँ, बहुत छोटे शहर से। जब मैं यहाँ 18 साल पहले शादी होके आई थी तो मेरे दिमाग में बड़ा अलग वो था, यार दिल्ली है, बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग होंगे, बड़े मतलब बड़े खुले विचारों वाले लोग। सारी चीजों पे रात भर में पानी फिर गया, क्योंकि यहाँ पे थे इतने बड़े बड़े घूंघट, यहाँ पे थे दिन में सुबह उठते ही रात को सोते तक कम से कम 50 बार आपको पैर छूना है। आपको खाने से पहले भी पैर छूना, आपको नहाने के बाद भी पैर छूना, मतलब
सो मेनी थिंग्स। अब मैंने जो वॉयलेंस देखे अपने अगल बगल में हर चीज में, तो मुझे ऐसा लगा है कि हम कहाँ है आज भी। चलो मेरी शादी को तो 18 साल हो गए, 18 साल पहले की स्थिति भी वही थी, और कल जो स्थिति मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कल भी वही है। सो हम लोग तभी सुधर पाएंगे जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। हम सोसाइटी से चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तो लड़की भी हूँ, ऊपर से विकलांग हूँ, तो मैंने तो डबल डिस्क्रिमिनेशन झेला है। मैंने हमेशा, मतलब मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा मुझे 2013 तक, 2013 में मेरी एज 32 थी, 2013 तक मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, वो पाप है, पाप है, पाप पैदा कर दिया, पाप सामने आ गया, ये है वो है। तो मेरा जो पाप से प्राइड का सफर था ना, वो मेरे नेशनल अवार्ड के बाद जो 2013 में मुझे पहली बार मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तब वो खत्म हुआ। सो यू हैव टू प्रूव, मतलब आपको पहले आपको चारों बच्चों में प्रूव करना पड़ा, मुझे प्रूव करना पड़ा कि मैं विकलांग के साथ साथ सोसाइटी के लिए या अपने लिए या आप लोगों के लिए भी कर सकती। मतलब अब मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, सब लोग बहुत, सबकी बहुत प्यारी हूँ, हर चीज है। अब मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी भी नहीं है, ना इन लॉज की तरफ से है, ना अपने घर वालों की तरफ से। लेकिन क्या है ना कि जो केयर, जो लव, जो अटेंशन आपको बचपन से चाहिए होती है, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट तो खराब होता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा मिट्टी का गोला, उसको जैसे आप शेप दोगे वैसे ही आप दो। वही है मेरा। वो जो स्ट्रेस लेवल था, वो जो 32 एज तक मैंने कैसे कैसे रोज रोज जो सब शब्द सुने, या जैसे जैसे चीजें मैं सुन, तो वो मैं फेडअप होते गई, गुस्सा मुझे आने लगा, मैं अपने कंट्रोल नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब बहुत सारी चीजें करती गई। लेकिन कहीं नहीं, वो 2013 के बाद वो चीजें कम होती गई, क्योंकि मेरा अचीवमेंट लेवल बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और मेरे प्रति, मेरे घर वालों का, मेरे सबका, सोसाइटी का प्यार बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। बट मुझे लगता है उसके लिए भी मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा, तो हमें ही पहले प्रूव करना है। विकलांग, इवन डिसेबिलिटी सेक्टर में हम लोग क्यों लोगों से बोलते हैं कि यार हमें सिंपैथी नहीं चाहिए। पहले तुम वो काम तो करो, सिंपैथी वाला काम करो ना। आप काम ही ऐसे करो कि आपको एम्पैथी मिले, सिंपैथी मिले ही ना। कोई आपको बोले ना, अगर प्लेन रोड पे आप चल रहे हो और कोई आपको बोल रहा है पुश करना है, आप मना कर दो, आप लो ही मत वहां सिंपैथी। दैट्स द एग्जांपल, छोटा। हाँ, कहीं कोई वैसा रोड है जहां आपको जरूरत है तो यू कैन आस्क, बट आप प्लेन रोड पे भी अगर आप किसी को बोल रहे हो यार नहीं मुझे यहाँ पे पुश कर दो। सो हमारी ही ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ही स्पून फीडिंग की जो वो था ना, मिलेगा तो मतलब जुबान तक वाला जो है स्पून फीडिंग वाला, उस दौर में चल रहे हैं हम। तो डिसेबिलिटी सेक्टर में भी सेम थिंग है। मैं अभी भी, मुझे गवर्नमेंट से शिकायत है, मुझे सोसाइटी से शिकायत है, लेकिन वो शिकायतें मुझे अपनी आवाज बुलंद करके खुद मिटानी पड़ेगी या खुद कम करनी पड़ेगी। तो आई एम प्राउडली से कि मैं गवर्नमेंट के साथ भी एक्टिविज्म करती हूँ, मैं सोसाइटी के साथ मिलके बात करती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि डिसेबिलिटी आपके देखने में है, हमारे अंदर नहीं। सो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं प्रैक्टिस करने आती हूँ, तो वो गार्ड ना 1 साल से पहले, अभी 2000 मतलब 5-7 साल पहले की बात होगी, वो गार्ड आए, बेचारी मैडम आप बहुत सुंदर हो, भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रोज बोलता था, रोज बोलता था। मैंने कहा यार इसका परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, ये बेचारी सुन सुन के ना अब मैं भी थक गई। तो एक दिन मैंने उसको बिठा के प्रैक्टिस खत्म करके उसके साथ बैठी, ना कितने बच्चे हैं आपके? कह रहा 4। मैंने कहा हम भी 4 है। तो कह रहा, मैंने कहा क्या करते हैं? कह रहे सब अपने घर में रोटी बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे भी 3 भाई बहन हैं, वो दोनों भाई जो बहनें हैं वो भी हाउस वाइफ है, वो भी अपने अपने घर में रोटी बना रही है, और भाई जो है पापा की शॉप संभालता है। लेकिन मैंने कहा मैं ना पूरे देश विदेश घूमती हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ, एक्टर्स से मिलती हूँ, पॉलिटिशियंस से मिलती हूँ, बहुत नाम है, गूगल पे सुवर्ण राज डालोगे तो तुरंत आ जाऊंगी। तो कह रहा ओ मैडम ऐसे भी है। मैंने कहा फिर अब बेचारा कौन हुआ? कह रहे हम। तो मैंने कहा सो यू हैव टू चेंज, मतलब आपको वो मेंटेलिटी कैसे चेंज करनी है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यू नेवर नो, आप कभी किसी को ये नहीं बोल सकते। आप गवर्नमेंट को कैसे बोल दोगे कि हमें ये दो, वो दो, फलाना दो? अरे गवर्नमेंट ने तो दे भी रखा है, कुछ कुछ चीजें तो दे रखी है। सुगम्य भारत अभियान के बारे 2016 का लॉन्च है। आई एम एक्सेस ऑडिटर, मैं उस अभियान की ऑडिटर भी हूँ। कितने लोगों को पता है कि कहीं पे स्टेप है तो उसको आपका फोटो लेना है, वहां रैंप नहीं है, वहां लिफ्ट नहीं है, वहां ब्रेल नहीं है, वहां टॉयलेट नहीं है, तो आपको उसकी फोटोज लेनी है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे टैग करनी है, तो वो लोग आपके लिए काम कर। नहीं पता, बस रोएंगे यार हमें कोई 4 लोग उठाए ले जाए। अरे पहले आवाज तो उठाओ, पहले आवाज तो उठाओ, पहले आवाज उठानी पड़ेगी। आप बोलो तो सही, रेलवे का मुद्दा हुआ था, अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो 2018 का मेरे साथ,
मुझे अपर बर्थ मिल गया था। मैंने कोच में बैठे बैठे दूसरा दिल्ली डेस्टिनेशन आने से पहले 50 से ज्यादा मीडिया ट्रेन के अंदर बुला ली थी। और मैंने तब सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे बुला लिया था। उन्होंने मुझे बोला था सुवर्णा 150 साल पुराना सिस्टम है। मैंने कहा लंदन का 150 से भी पुराना सिस्टम है। उनके पास अगर मैनुअल रैंप्स है, कोई बंदा उनको दिख रहा है, मैंने अपनी वीडियो दिखाई, मैंने कहा देखो बंदा आया, मुझे रैंप से चढ़ाया, दूसरे स्टेशन पे 3 घंटे बाद दूसरा स्टेशन आया था लंदन में, मुझे जहां उतरना था। दूसरा स्टेशन पे 3 घंटे बाद एक बंदा रेडी था। तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? उनका भी तो स्टेशन वही सही है। रेलवे का जो कोच और प्लेटफॉर्म के बीच का एक जो गैप है, उसमें भी गैप है, वो है, सब कुछ है। तो उनके पास तो है सब कुछ। मैं तो वीडियोस डालती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। फिर मैंने उनको बोला प्रभु जी, तो उन्होंने कहा कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने कहा अभी तक 150 साल में किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब सुवर्ण राज है, अब सुवर्ण राज आवाज उठा रही है और आपको करना पड़ेगा। तो मेरा अभी भी उनके साथ ये लड़ाई चल रही है। और आपको पता है मैं अभी भी बाय एयर सफर कर सकती हूँ, मैं करती भी हूँ, बट मैं कभी ना कभी साल में 2 से 3 बार बाय ट्रेन सफर करती हूँ, जानबूझ के इनकी नाक उनको तंग करने के। जबकि इन्होंने मुझे, अपने रेलवे मिनिस्ट्रीज ने मुझे अपने वीआईपी नंबर्स दिए हुए हैं कि मैडम प्लीज कहीं जाते हो तो आप हमें एक बार शेयर कर दिया करो अपनी जर्नी। मुझे पता है वो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, बट आई डोंट वांट वीआईपी ट्रीटमेंट। मुझे सबके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। जब तक लड़ोगे नहीं ना, जब तक चिमटी नहीं करोगे या सुई नहीं चुभाओगे, तब तक अगला नहीं जागेगा, ये मुझे लगता है। Thank you, आपने इतनी Swarna. Thank इम्पोर्टेंट you बात so बोल दी। very much. This was very iconic, and I'm so sorry that आप किसी भी scars जो आपके पुराने हैं, you had to go through them, whatever. But it is so energetic and such a beautiful way that you have explained to us कि अपनी राह खुद बनानी चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि disability और सिर्फ दूसरे की आंख में है, हमारे अंदर नहीं है, तो इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है। And here I will take you back where you started your conversation by saying we women, even men have their own issues, पर वो बोल नहीं पाते हैं, समाज की परंपरा वैसी है। आई थिंक क्राइटेरिया इतना अच्छा आपने सेट कर दिया है कि उसी इसकी नजर से अब मैं देखूंगी कि सिंपैथी तो दूसरे देखने वाले की नजर में है, हमारे में सिंपैथी नहीं है। This is so beautiful, and I'm so sorry that you had to go through so much pain in childhood. And you are a true icon. Women today on this platform are true icons. Thank you so very much. ये आज शुरुआत है और हम इस अच्छी एनर्जी को एक अच्छा और प्लेटफॉर्म देंगे और इसको और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर सिंपल सी बीइंग बात है मनीषा जी, हम ना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इंडिया जो है विकसित भारत की विकसित की तरफ से बढ़ रहा है, हम लोग स्मार्ट सिटी पे बात कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब हमारी सोच स्मार्ट होगी। सो वी हैव टू डू फर्स्ट, हमारी सोच को हमें डेवलप करना। Thank you so very much, Swarna. Thank you. We'll keep all this in mind. Shani, please take it further. थैंक यू मनीषा जी। तो वंदना जी, आपने मतलब जो भी एस्पेक्ट मैंने सोचा था जो इस बातचीत में होना चाहिए, राइट फ्रॉम एम्पावरमेंट टू बीइंग योर ओन चैंपियन, क्योंकि अगर कोई चैलेंज है तो सबसे पहले आपको खुद उस चीज को समझ के उसके बारे में बात करना जरूरी है। एक विक्टिम बने रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जो हम आप दोनों अनुपमा और सुवर्णा जी की स्टोरी से समझ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी सवाल पूछने की जरूरत थी, आपने खुद ही बहुत ही सिस्टमैटिकली हर एक चीज को मतलब खत्म कर दिया एकदम। तो दिस वाज लाइक ट्रूली पावर पैक्ड। थैंक यू सो मच। आपने ये शेयर किया हमारे साथ। तो आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा तो मैं बहुत एक्साइटेड थी दैट वी आर एबल टू गेट सम टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल टू स्पीक विद अस। और बिकॉज आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बोली पॉलिसी को लेकर कि कैसे पॉलिसी या तो एग्जिस्ट करती है और यूटिलाइज नहीं हो रही है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, पर इस बात पर को समझ के उस पे एक्ट करने के लिए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंक्लूजन पर है। कि बात ये तो हो गई कि हाँ महिलाओं ने, आप सभी ने, मतलब इस बात पे तो कोई दो राय ही नहीं है कि आप सभी ने बहुत चैलेंजेस फेस किए एंड उसको आपने ओवरकम किया खुद ही, चाहे या तो सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस था पर्सनली प्रोफेशनली या फिर एक पॉलिसी इकोसिस्टम में नहीं भी था तो भी आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास प्रिविलेज थी नहीं थी, पर अक्रॉस द बोर्ड कई बार विमेन के केसेस में प्रिविलेज भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि जिस तरीके के चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, जैसे अनुपमा ने बताया, कई बार प्रिविलेज आपको गारंटी नहीं करता है कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विच इज वाई आई वांट टू आस्क दिस टू चेतना कि जब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं
तो स्पेशली फॉर विमेन इन वर्क प्लेसेस, विमेन इन स्टेम, विमेन इन साइंस, तो जब हम ये बात करते हैं तो क्या आपके दिमाग से आपको लगता है सजेशन है दैट व्हाट शुड पॉलिसीज कीप इन माइंड, या किस तरीके की लीडर पॉलिसी, लीडरशिप और प्रैक्टिसेस, ये तीन चीजें, इसमें आप क्या बोलेंगे कि कंटिन्यू द जर्नी ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड enhance that further, क्या inclusive practices जरूरी हैं to make sure that women are supported through and through? Open floor, सुवर्णा जी ने तो इस पे बहुत important बात बोल दी है। मनीषा जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? Also factoring in two more important points here, because हम ये भी देख रहे थे, we wanted to keep this a power packed conversation और बहुत लंबा नहीं, तो उसमें एक चीज और भी थी कि कैसे आप, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मनीषा जी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, एंड दैट वाज समथिंग आई वाज गोइंग टू आस्क फर्दर। तो तीन चार चीजें आती हैं, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, वर्क लाइफ बैलेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? Thank you, Shani. I have almost shared my thought process on almost everything. See, I always feel that growth is mutual. Whether you talk about, as Anupama said, that you talk about family support, you talk about friends, you talk about having a good partner in life is very, very important. And when you have stability in life, you move towards having good mentors also in life. And when you have the right combination of these people, then you start thinking about your professional stability. And when you have, like Ishani has a good workplace, when you have good work-life balance, good support from everywhere, then I think anybody can say, yes, stability is there in my life. But as Swarna very beautifully said, कि आदत ही पड़ गई है शिकायत करने की, and there is a competitive edge everywhere. And when you make your own space, then comes a term which I have been talking about at every platform. Yes, that financial stability is very important, especially for women. You know, we start taking things for granted. We think that, you know, giving back whatever we earn and we make the household stable will be like a happy household, which I don't think is the story anymore. You know, life is not about just giving everything you earn to the family. Where is the time and where is the sufficient fund for self-care? Self-care is no more a luxury. Self-care is very important. When you feel that you're stable, stability counts about your mental, your physical, and your spiritual health, as Chetna mentioned. I really wanted to discuss about the chanting part, what she introduced. But, you know, everything, as we just discussed, really depends on how we look at life. Whatever I just spoke is asking from people around, creating that atmosphere. But creation is inside. Creation is here. If you think that stability you can't create, but you have a stable mind to create that that stability, that is the best part of being a human being. It is not that life will offer you a perfect life always. Life will offer you right things always. It is how you create an environment where you feel satisfied. That is most important. Then comes the landmarks which we need to achieve in life. So this is how, Ishani, we can take this conversation further. And I would really think that, in fact, I practice this in my life. It is not that everything I have also got very perfect in my life. I want a lot of things, but I create a level where I feel that, yes, I'm blessed, I'm satisfied. And this is how I spread this energy around. And I really practice a lot of acceptance in my life. Whatever is mine, whether it's happiness, whether it's anything bad, it will come to me. So I should be prepared how to take care of myself. So this is, I think, should be the mantra of every individual, how you take life and in what capacity you deal with your issues. Absolutely. कोई बात नहीं, तो हम आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे थे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि जब हम बात करते हैं मोर इंक्लूजन एट वर्क प्लेस, स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी में, तो आप क्या कहना चाहोगे फॉर विमेन इन वर्क प्लेस,
किस तरीके से पॉलिसी लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे और प्रैक्टिस लेवल पे, तीनों लेवल पर किस तरीके का आपका एक्सपेक्टेशन है दैट इंक्लूजन फॉर विमेन इन वर्क प्लेस कैन बी बेटर, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? First of all, Ishani, I want to say something about what Anupam ji said and another speaker has said. Definitely, what the females are facing, there's a huge biasness is there. Right now, I am audible to you. Perfect. So, Ishani, first of all, every female should know that वो ही अपनी सबसे बड़ा ब्रिज है, मतलब उनको अपने डिसीजंस लेने आने चाहिए। पहली बात, उनको हर एस्पेक्ट पे सोचना आना चाहिए क्या सही है क्या गलत। देखिए, फैमिली आपके बारे में सोचती है, बट समटाइम्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू और फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक है। स्पेशली फॉर मेरी मैरिज विद इन अ वीक हुई है डिसाइडेड, ठीक है, मैंने उससे पहले बात भी नहीं किया था बंदे से, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि हर एक लड़की के लिए सबसे बड़ा पिलर उसकी मदर होती है। अगर उसकी मदर का सपोर्ट उसके पास है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में, जब वो शादी करती है, बेबी होता है, बहुत बार हमें किसी का सपोर्ट चाहिए होता है प्रोफेशनल फील्ड पे रहने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, किसी एक मेंबर का होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, जो अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे, मुझे लगता है कि जब से वर्क फ्रॉम होम आया है या लोगों को लगने लगा है कि फीमेल्स आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क, they have extended the hours. I want to tell the companies also that abroad में भी ना, they are not used to take for granted. अगर उनका 8 hours का job है, then they will take a call only between 9 to 5. I have worked in the international clinical trials. If we had something default in the equipment also, so she used to say, look, I am preparing my child for the school. I will take a call after 10 itself. So what is, अगर extended है, देखो कभी कभी it's okay, लेकिन अगर ये हर रोज होता है तो वो उस लड़की की पर्सनल लाइफ को हैम्पर करेगा ही करेगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी ऑफिस लेवल पे भी, और मैं ये नहीं कह रही कि मेंस के साथ आप ये कर सकते हैं। आई थिंक हमारी वर्किंग पॉलिसीज भी ऐसे होने चाहिए कि भाई एक लेवल होना चाहिए, ठीक है, 10 to 6 जॉब है, कभी इमरजेंसी आ गई अपने कॉन्टैक्ट, इट डजंट मीन आप डेली बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉयज को रोकना शुरू करें, ठीक है। क्यों होता क्या है कि जब एक लेवल पे फीमेल नहीं कर पाती तो फिर उसे मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। अब उन्होंने कंपैरिजन के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर करना शुरू कर दिया। दे डोंट वांट कि दे हैव अ चाइल्ड और समथिंग, कि यार हम जॉइंट फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या हम मैरिज के शादी के साथ हम नहीं कर पाएंगे काम, हमारा वर्किंग प्रोफेशन ऐसा नहीं है। दैट इज, दे नीड टू अंडरस्टैंड इट। एंड डेफिनेटली लाइफ पार्टनर, उनको तो समझना होगा। अब वो टाइम गए, जैसे आपकी मम्मी आपकी दादी जैसी नहीं है ना, आपकी वाइफ भी आपकी मम्मी जैसी नहीं हो सकती। इज इट वेरी क्लियर कि वो अगर वो काम कर रही है तो आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा। थैंक यू चेतना, थैंक यू सो मच। सो यस, ऑफ कोर्स, टू समराइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सभी ने बोली। फ्रॉम व्हाट चेतना सेज दैट विमेन आर एजुकेटेड एंटरिंग वर्क प्लेसेस, कई बार हमें अप टू मेक आवर ओन प्लेसेस हमको over compromise करना पड़ता है। We have to, in our family systems also, because first of all, if you're talking about gender equality, that also means that there has to be a contribution from everybody in the household. It's a team game. You can't do everything on your own. So empowerment का जो एक बहुत ही critical interpretation है, which a lot of people do not agree with, especially when we talk about gender equality, कि भाई you have one woman in the form of Durga who has so many hands and is doing everything, which is not possible. Down the line, this becomes one of the reasons why women face most of the health-related challenges in later ages. So how do you make sure you are looking at your nutritional requirements? आप अपना कितना ध्यान रख रहे हैं? Self-care has become so important and talked about, mainly because शायद we are putting more on the table than we should.
But how do you make sure you strike that balance and people around you understand that? Putting very important issues about women and disability rights, जो सुवर्णा जी ने बोला, how policies what exist are also not being addressed or utilized mainly because हम कहीं ना कहीं expect करते हैं that somebody from the outside will come and solve the problems for us. But we have to make the initiative. And that's what Anupama talked about, how initiative means financial independence. And I think that's the most important thing we talk about in the affirmative action space. मनीषा जी के साथ भी जब हम कम्युनिटी लेवल पे हमारा अभिनारी प्रोग्राम है उसमें हम जब काम करते हैं तो औरतें यही बोलती हैं कि हाँ हम चाहते हैं हम कुछ अपने लिए करें so that we can contribute some money to the household economics but also to make sure we feel that हाँ हम कुछ हैं, we have our own esteem individually, we bring something unique to the table. तो जब हम we are in workplaces for two reasons. One, for our financial independence, yes, to support the household economics, yes, but also to fulfill our own ambitions. So how do you make sure that both are getting recognized and in the hustle are not forgotten? So thank you so much for spending so much time. And we could see the struggle where people were literally moving in and out of the room. But that's exactly the point. I love how each one of you laid down your requirements that I will not be able to do this or I can't give more than time in that. Most of the people, when they hear these kind of things, they see them as limitations. कि अरे इसके पास time नहीं है. But what I see, people are putting down their boundaries and saying कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ और मैं और करना चाहती हूँ, but this is what I can do. And this is exactly why Abhi Awaaz Cafe has come into place. Because no matter where you are, no matter what you're doing, we want you to be part of the conversation. We want to take this forward in the best way possible for all of us. Over to you, Manisha ji. What would you like to say before we Shani, close? thank you so much for having all of us here. Thank you, Anupama. Thank you, Suvarna. Thank you, Chetna. Such a beautiful take this evening. I'm taking away with my cup of coffee in my hand from this cafe. It's so beautiful. I am really going to take this conversation ahead. I will ask Ishani to, curate something in the coming future once you come down from the hills, Anupama, so that we can physically meet and we can take this further. We are also thinking, transforming this energy into a podcast. So please be ready. We need to take it at a very bigger level and we need to be the right icons of transformation. Yes. Manisha ji, I have an update before everybody leaves the room. मुझे 2 minute और चाहिए आप सबके because as you must see that a lot of people are joining this conversation. Some people have put up some questions. I know, Anupama, we are taking more time than we had asked for you, but if all of you could just quickly answer these questions for the young people in the audience. I'm going to read out those questions. पहला है, how do you stay motivated to keep giving even when results are not immediate? And the second question is, how can I contribute meaningfully to social change while still learning? So, बड़े question है. I would say the second question definitely, Manisha ji, it is meant for you. ये तो आप ही को कहना पड़ेगा. First one, if Chetna is within network, please, Anupama, Chetna, briefly आप अपना thoughts share करिए and then we will happily close. How do you stay motivated to keep giving even when the results are not immediate? I would like to tell Alina that whenever you give, just don't expect results. Do not. You just give. So whether we are trying to help another person who is in distress, whether we are trying to change something which is at the level of people's perception, like for example, how people see animals as commodities to be used, because me and my partner, we keep working in this space where we want to make people understand that nature is not ours to exploit. And by nature, we mean the nature and all the animals with it. We never expect that people will understand it in one go. For example, I work in the educational space. I try to inculcate or make people aware about, say, climate change or, animal rights, or with the women about financial independence, having fixed deposits in place, etc. It takes time because there's just so much learning which has been done by the society. You need to take time to unlearn. And if we are trying to help somebody, we need to keep doing it consistently and only then we will see some change.
So I don't expect anything to happen immediately. Changes, especially big ones, or the ones which are fundamental and they question the status quo, takes a lot of time to show any result. So we need to be patient. We need to just do our thing and just keep at it. Be consistent. Thank you, Anupama. Chetna? Yes, Shani. This is a important question that all of us should learn how to give. हमने हमेशा सुना है कि पेड़ अपना फ्रूट खुद नहीं खाता है, वो हम सबके लिए होता है. Similarly, हम जो कर रहे हैं, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं. एंड आई कैन टेल यू, मैंने अपने सामने एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में बदलते हुए देखा है. आफ्टर हैविंग सो मच पॉलिटिकल प्रेशर, आई कैन टेल यू it has opened the opportunities for my juniors, for my loved ones, along with me also. In future, if they will generate some good post for the scientist or someone, then females are equally eligible for that. It is not that they directly out of that thing. Similarly, there are many things. I'm blessed with a daughter. Okay, she's now 2 years old. In future, if she want to go somewhere where they are the males dominant field, now they are completely revoked. Air Force, everything. I'm very passionate about the armed forces, and I want the female should go there. Similarly, they should go for the neurosciences where they can explore the things. Thank I you. am That's also a getting beautiful something. question. I am getting freedom because of my ancestors. I am right now cherishing this part because मेरे ancestors ने वो fight किया, वो आए पाकिस्तान से इधर, सब कुछ move किया, fight किया. हम सबको कुछ ना कुछ दे के भी जाना है. सब कुछ हम लेके नहीं जा सकते हैं यहाँ से. So it's Beautiful thought, very Chetna. important. Thank you so much. मनीषा जी, आपके लिए सवाल. How do you stay motivated to keep giving even no? How can I contribute meaningfully to social change while still learning? I'm learning, but I want to contribute. So I'll answer the two questions in small parts. Way of giving has to be a part of life. You know, God was so kind in my case that I had huge part of tough journey in my life. But I always believed in the value system which I got from home, that giving is the beauty. And that transformed my life with so much learning, so much acceptance which came. Today, I've learned through my journey that, you can't change much, but you should still keep making efforts. Impact is what I love. Sometimes I'm not able to create impact. That's the fact. But my consistent efforts of changing maybe one life would give me happiness. It's so beautiful. And second part is that when nothing is there, then the challenges become more meaningful. Then you create such situations, and when you practice surrender and acceptance, I don't know where things come from, what comes from, which gives me more energy, which transforms, my habit or my learnings of giving. It gives me more channelized energy, and it's a vicious circle. I give, I get back. I give, and whether it's blessings, whether it's love, whether it's attention, respect, affection, whatever. God has been very, very kind. So I think we as women are made to understand this, and this concept which we have learned from people around us, from the social fabric which we were born in, we should keep it alive. Here comes what I was talking about, that the younger generations are losing respect into relationships. They should go back and understand how dadis and nanis used to be so thoughtful about the entire family. And family would be like someone where your daughter is married, and their co-sister-in-law's children and their sister-in-laws. Families used to be huge, such a beautiful social fabric we were born into. We should keep things alive as much we can. So coming back to the question is that the beauty of giving is always keeps you complete, and it keeps you keep going. So this is my learning, and I practice it. Before we close, Sapna is asking, if you could give one piece of advice to your younger self, what would it be? One sentence.
only For all of us, or for all of us. so let's start with Anupama then. Anupama is always the first to go. To my younger self, taking ownership of my own decisions. I think I outsourced some very important decisions to my parents, and even if they had all the right intentions, the context changes while they were at your age. So don't do that. Take your own decisions, especially when it comes to your relationships and your work. I think always take your own decisions and be as informed as possible. Hang on. Chetna, one piece of advice to your younger self. What would it be? I think your network is still not working for you, maybe without the video and only audio. So Varna ji, आप भी बताइए एक piece of advice to your younger self. मेरा एडवाइस सुन के हंसना मत। देखिए, मैंने जो अपनी लाइफ जी है ना, टुडे आई एम 44, और 44 में मैंने बहुत कुछ देख लिया। तो मुझे एक चीज तो पता है, जीना है तो अपने लिए जियो। इतनी सी जिंदगी है, कब जाएंगे पता नहीं, तो किसी का कुछ नहीं सुनना। वो बोलते हैं ना, टेंशन लोगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। टेंशन लेना छोड़ दो, अगर पेंशन लेनी है तो। एंड यस, कि अपनी लड़कियों को, खासकर लड़कियों को तो हम संस्कार देते ही है, लड़कियों को खासकर यही बताना है कि जब तक तुम्हारे जेब में पैसा नहीं, फर्स्ट आप स्टेबल हुई है। लड़की कोई भी हो, चाहे उसकी एज 25 हो, 22 हो, 30 हो, 35 हो, पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद शादी करे, ताकि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अपने बेटे, फर्स्ट संस्कार बेटियों को कम, बेटों को ज्यादा देने चाहिए। मेरा भी बेटा है 15 साल का, तो मुझे भी लगता है कि हम अपने बेटे को संस्कार देंगे तो बेटियां अपने आप सेफ रहेगी। हमें उसको सिखाना चाहिए, तुम्हें अपनी बहन से, नॉट ओनली बहन से, अपने आसपास की हर लड़की से कैसे बात करनी है। Chetna, what would you like to say? One piece of advice to your younger self. This is the most important. Yeah. First, you should have a good education. Important. You should complete education. You should be independent. You should have a sense of taking a decision plus responsibility. What you are doing, what you have taken a step, and definitely should say no to the things. What you feel that is not right for you, not for your family. If you say, yeah, मेरी family ने कहा, मेरे elder brother sister ने, that's why I got married. No, you should know where to say no. That is important. You should take a decision ki हाँ, I have to complete my education. And one more thing, Ishani, still there are many girls who feel like sorry to say that, being get up very well means everything for the girl. No, you should have some skill. You should stand properly, have earnings, so that you are independent. सिर्फ अच्छे से रेडी होना, सुंदर दिखना कुछ नहीं होता है, उससे आपको ब्रेड नहीं मिलेगा खाने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अरे ये लड़की सुंदर है, इसको अच्छा लड़का मिल जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं है, तो पूरी जिंदगी अपने आप को ब्यूटीफाई करने में लगी हुई है। और एक दिन क्या आता है, मैरिज हो जाती है, उसको डिच कर रहा है या उसके साथ हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर क्या? पेरेंट्स भी एक लेवल तक ही हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। Thank you, Chetna. That was really very, very important. Thank you, Manisha ji. So my take is that, to my take from my take is that what I didn't learn in life was self-love. Please, every human being, male or female, we should specially teach our children to take care of themselves. Self-love is not a luxury, it's a necessity. My mother was an IS officer. She never taught me that, you got to love yourself. I really miss that. I would have been a far better person inside and out if I would have understood the concept of self-love. Beautiful. Thank you, everyone. We can't tell you how much we appreciate your time. Anupama, I know you're starting your holiday, but you made the time for us. And in fact, more than the time we had asked for. Chetna, Subarna ji, thank you so much. You made sure that you were present for us despite the challenges. With this, we would love to close. We would love to follow up with you to have more conversations, and watch out for more conversations that we will be holding in the next few months. Thank you again, and have the best of the rest of the week to all of you. Yes, thank you. And we shall physically also meet very soon. Absolutely. Thank you so much for having me. me. Thank you, Anupama. Thank you, Chetna. Thank you. Thank you, Swarna. And thank you, Ishani, for this beautiful event.
Thank you so very much. Thank you, all of you.